Hey besties, how are you all? I hope you all are doing great at your place. I am Prachi from the channel Literature with Prachi, and today we are gonna continue with BEGC101 Block 3 Unit 2 Brichkatika Plot Structure Analysis. This is the third, or you could say the last part of this unit. Yes, you heard right. This is the last part of this unit, and after this, we are gonna talk about Unit 3. So besties, now let's talk about the topic of this unit. So as we know that we have already covered these topics in our previous session. So today we are going to talk about these remaining topics, which is integration of view of the state with the theme in Act 9 and 10. Next is plot structure and its main dimensions. Integration of the view of the state with the theme in Acts 9 to 10th. So 9th acts हम लोग start करने वाले हैं. Act 9th of the play goes into a nitty-gritty of law, social structures, and the way the mighty as well as weaker humans conduct themselves in the given sequence of happenings. As the act begins, the judge announces in no uncertain terms the evil nature of Sakara. When Sodhanaka begins the court's proceedings and calls out, "Gentlemen, here is this king's brother-in-law come to the court who wishes to present a case." The judge remarks, "How, at the very commencement, there is the king's brother-in-law wanting to present a case? It is just like an eclipse at sunrise, foretelling the death of some great man. Yet the state seems paralyzed before King Palaka and his family, that is given to autocratic ways and at keeping the interests of citizens at bay." यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि यहाँ पे सकारा जो है एक केस लेके आया है, और वो केस क्या है ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि वसंत सेना का मर्डर हुआ है. बट मर्डर तो सकारा ने किया था, तो वो क्यों आया है? तो मैं बता दूं कि उसने जो है ये जो इल्जाम है ये चारुदत्त पे लगा दिया कि चारुदत्त ने वसंत सेना को मारा है, उसका मर्डर किया है. Court proceeds in one direction, and the king's policies work as a deterrent to the smooth functioning of the judicial system. Later praise is showered on Charudat's antecedents. The names of his grandfather and father are mentioned to stabilize his worth and moral standing. Soon, however, the fact of the case of Vasant Sena's supposed killing begin pointing towards Charudatta's hand, who is accused of committing the act. तो देखो चारुदत्त का बैकग्राउंड, उसके जो फादर हो गए, ग्रैंडफादर हो गए, उन लोगों ने काफी कुछ किया है. वो लोग अपने मोरल स्टैंडिंग की वजह से जाने जाते हैं, और चारुदत्त खुद भी. ठीक है, बट यहाँ पे वसंत सेना को मारने का जो सस्पेक्ट है वो चारुदत्त पे जा रहा है. अब देखो यहाँ पे रीजन है कि चारुदत्त पे क्यों जा रहा है. तो रोहसेना जो चारुदत्त का सन है, उसके काट में वसंत सेना का क्या मिला है? ऑर्नामेंट्स मिला है. इसकी वजह से ये शक चारुदत्त की तरफ बढ़ गया कि चारुदत्त ने वसंत सेना को ऑर्नामेंट्स यानी गोल्ड्स के लिए मार दिया. सो अब हम लोग एक्ट 9 के बारे में कंटिन्यू ही करने वाले हैं, which is Act 9 offers a long narrative of Sakara's tricks that present a topsy-turvy world. तो यहाँ पे हमें सकारा के ट्रिक के बारे में पता चलता है कि किस तरह से जो सकारा है यानी संस्थान का है, उसने चारुदत्त को फंसा दिया है. The final question remains whether Charudatta will be hanged for the crime he is accused of committing, and this gives a strong note of suspense to the play. अब यहाँ पे चारुदत्त की गलती तो नहीं है, बट अगर सोसाइटी की बात करें तो प्ले में किसी को भी नहीं पता इस बात का कि चारुदत्त जो है वो इनोसेंट है ना. तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि क्या उसे हैंग करवा दिया जाएगा उसके क्राइम के लिए. एक्ट 9 इज राइटली गिवन द नेम द ट्रायल. तो एक्ट 9 का नेम क्या है? द ट्रायल है. ठीक है, अब ट्रायल क्या है ये आपको अच्छे से पता होगा. एक्ट 10 में हम लोग अब एंटर करते हैं.
ठीक है। तो यहाँ पे दो चंडाल्स के साथ एक्ट 10 स्टार्ट होता है। अब चंडाल यहाँ पे क्या है, मतलब जो फांसी दिलवाते हैं ना, तो वो हो गया चंडाल, ठीक है। दे आर द लोएस्ट ऑफ द लो, proverbially they are the messengers of death and represent only the snuffing out of life। जैसा मैंने बताया, मतलब वो लोग वहां पे मेनली मारने के लिए ही आते हैं, जो भी कल्प्रिट होते हैं, जो दोषी होते हैं उन्हें। In the play they end up as executioners literally, yet they show control of temper and give the impression of carrying out the job professionally। ठीक है, वो अपनी जॉब को प्रोफेशनली करते हैं, बस इतना ही समझो आप इसमें। The two Chandals and Charudat face each other moments before the execution is likely to happen। मतलब समझ लो वो लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं, चारुदत्त जो है दोनों को, चंडाल्स को देखा था, चंडाल चारुदत्त को देख रहे होते हैं, इसलिए। But since the play is fast approaching the end, latent expectations begin hinting at a resolution contrary to the one that is anticipated in the previous act. Soon Sakara's servant Sthavarka will have a change of heart and he will spill the beans. The most to be hurt by Sthavarka's conduct will understandably be Sakara himself. It is finally stated that Sakara has killed Vasansena and put instead the blame on Charudat। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे स्थावरका का जो है एकदम कुछ चेंज आ जाता है उसके अंदर, जिसके लिए उसको बुरा लगने लगता है कि चारुदत्त इतना अच्छा पर्सन है और उसे फांसी लग रही है, वाइल इधर जो उसका मास्टर है सकारा, वो यहाँ पे बचा हुआ है। बल्कि उसका मर्डर, वसंत सेना का मर्डर किसने किया था, सकारा ने किया था। तो यहाँ पे आगे जाके ये बात पता चल जाता है कि सकारा ने वसंत सेना को मारा है और जो सारा ब्लेम है वो चारुदत्त पे डाल दिया है। A play of this kind cannot end in death and attendant misery। तो इस तरह का प्ले, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि जो हमारा इंडियन प्ले होता है वो मोस्टली हमारा ट्रेजिक एंडिंग नहीं होता उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे भी ट्रेजिक एंडिंग नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे जो हमारी हीरोइन है वसंत सेना, वो भी अलाइव हो जाती है, ठीक है। So the poetics do not allow it. Literature is supposed to offer entertainment, and episodes of distress are to only heighten the effect of representation. In the last pages, Vasant Sena comes to life as if emerging from the ashes like a phoenix to announce that she is alive. Accompanying Vasant Sena's disclosure is the news of the fall of King Palaka and King Arika rising to occupy the throne। और यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि जो आरिका, जिसकी हेल्प किसने की थी, चारुदत्त ने की थी, वो भी यहाँ पे किंग पालका को हटाकर वो किंग बन चुका है अब। In this manner, the conclusion is an appropriate summing up of the complex pattern of situation offered in the play। तो देखो इसके बाद क्या होता है, जब आरिका किंग बन जाता है तो फिर वो चारुदत्त को फिर से वेल्दी बना देता है और उसको मतलब थैंकफुली कि उसने उसकी हेल्प की थी, तभी तो आज राजा बन पाया ना, नहीं तो वो एक प्रिजनर की तरह रहता वो अगर पकड़ा जाता तो यहाँ पे थैंकफुल रहता है चारुदत्त के लिए। उसके बाद फिर वो उसको फिर से वेल्दी बना देता है और यहाँ पे वसंत सेना भी वापस आ चुकी है, तो सब कुछ हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाता है। Okay, so here is the last topic of this unit. Plot structure and its many dimensions. Mrishkatika is a dramatic rendering of a sequence of happenings that involve the love alliance between Charudat and the quotation Vasant Sena। मतलब इतना समझ लो कि ये जो हमारा जो मृचकटिका, ये जो प्ले है, ये मेनली दो कैरेक्टर्स के बीच में घूम रहा होता है, चारुदत्त एंड वसंत सेना। और वो दोनों क्या है, वो दोनों इस प्ले के प्रोटैगोनिस्ट्स हैं, ठीक है, हीरो और हीरोइन है। This is presented in the background of different political happenings that are kept largely off stage, but the tussle between good and evil is squarely presented in a plot that is complex and virtue driven। देखो यहाँ पे मैंने पहले भी बताया हुआ है, पहले के जो हमारा ब्लॉक है उसके यूनिट्स उसमें बताया हुआ है कि ये एक प्रकरण प्ले है, तो यहाँ पे गॉड का इंटरवेंशन नहीं होता, बट गुड और इविल यहाँ पे भी देखने को हमें मिला है। इस प्लॉट में बहुत ही अच्छे से इसे दिखाया गया है। यहाँ पे सोसाइटी को भी बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट किया गया है। The sympathy earned by the lovers and the punishment visiting the villain is the staple of popular entertainment and the same has been achieved with effect। तो देखो यहाँ पे क्या है कि विलन जो है, जो बुरा है, उसे पनिशमेंट मिला, और जो गुड है, जो लवर्स हैं, उन्हें यहाँ पे सिंपैथी मिल रही है। जो गुड है वो बच गया, जैसे चारुदत्त।
This is structurally built in at the level of the dramatic plot. It avoids all unnecessary details such as providing space to King Arika, who will ascend the throne, and King Palika, who will be ousted from the power. यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे चारुदत्त और वसंत सेना पे ज्यादा फोकस किया गया, उनके लाइफ पे ज्यादा फोकस किया गया और ज्यादा कैरेक्टर्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। जैसे कि आपका किंग पालिका और किंग आर्यका को ही ले लो, तो उनके बारे में उतना ज्यादा डिटेल में नहीं बताया गया, बस थोड़ा सा बताया गया है कि जो आर्यका एक प्रिजनर होता है, फिर वो किंग पालिका को हटाकर खुद किंग बन जाता है। At the same time, a long account of ups and downs, as well as the recreation of various scenes in the middle of the play's movement, follows meticulous planning. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपका प्ले है उसमें कितने अच्छे तरीके से अप्स एंड डाउन्स दिखाए गए हैं, डाउनफॉल दिखाया गया है। पहले तो हमारे प्रोटैगोनिस्ट, उसके बाद फिर से उन्हें ऊपर की तरफ उनका जो ग्रोथ है वो दिखाया गया है, उनकी गुड हार्ट की वजह से उनको जो है हेल्प मिली है किंग आर्या का से, और किस तरह से सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। It is evident that the play impresses on the strength of its density and richness. Each act is a cluster of varied situations that have characters moving in and going out, even as the unity of action remains intact. यहाँ पे जो यूनिटी ऑफ एक्शन है बहुत अच्छे से दिखाया गया है हमारा, और यहाँ के कैरेक्टर्स को भी बताया गया। यूनिटी ऑफ एक्शन, प्लेस, टाइम आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। ये पहले ही डिस्कस हो चुका है हमारा 101 102 दोनों ही सब्जेक्ट्स में। द पॉइंट्स द कैरेक्टर्स रेज एंड द डिसीजंस they take from one moment to the other in consonance with their behavior traits led congency to the plot structure emerging out of the presentation. तो हम लोग इस प्ले में देख सकते हैं कि किस तरह से जो कैरेक्टर्स है वो यहाँ पे अपना उनका ग्रोथ देखने को मिला है, वो जो डिसीजन ले रहे हैं हर एक मोमेंट पे, हर एक चीज को लेकर, वो आगे जाके उन्हें किस तरह अफेक्ट कर रहा है, उन्हें कैसे अफेक्ट कर रहा है, उनके बिहेवियर को कैसे अफेक्ट कर रहा है, किस तरह से जो हमारा प्लॉट है वो आगे की तरफ इवॉल्व हो रहा है। आई होप नाउ दिस इज क्लियर फॉर यू ऑल. Even if you have any query, then you can ask me in comment box, of course. So besties, now this is the end of this session and I hope this session is helpful for you. If yes, then smash that subscribe button and hit like. As well as if you have any query, then you can ask in the comment box, of course. And furthermore, you can join my Telegram channel. There you will keep updated with the notices of Ignou. And now we will meet in our next session. Until then, take care, goodbye, and keep studying.